मैं 30 सेकंड वाला टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद गो लाइव करना। So, good evening, everyone. Thank you for being here today. So, we will be starting soon. While we wait for others to join, here are some house rules we should keep in mind. So, please be respectful in the YouTube live chat and do feel free to ask any questions in the chat box. But more importantly, please be attentive as there will be a quiz at the end. So, सारे let's wait अपने for 2 फ्रेंड्स minutes. को सारे अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए लिंक. विल बी स्टार्टिंग इन 2 to 3 minutes. ओके. Till then, audience, can you please introduce yourselves? So, while we wait for others, let's have some introduction in the chat. Can everyone introduce themselves? Hello Pratik. Hello 𝗷𝗶𝗶𝗵𝗹𝗶. Hello Nilmani. Hello Pranjal. Hello. Hello Bhav. Are our mics working fine? Please confirm if we are audible clearly. Hello. Okay, Ravi. Yes, Dipankar. Even we are excited about this event. We'll start at 5:10. Still waiting for some more viewers. So all right, I guess we waited enough. Yes, okay. So thank you for waiting. Let's start now. So once again, let's go over the house rules. Please be respectful in the chat. Put your questions in the chat and be attentive for the quiz at the end. Yes, Okay, there will be a so quiz at the end. So be attentive. Okay. So today we'll be talking about entrepreneurship, and in this session we'll cover the key fundamentals about starting a company. So, if you have an idea after this event, you would have the basic knowledge about the company and how it works. So, let me introduce me. I am Vaishnav, and this is 𝗏𝗏, my Hello co-host, everyone. and we'll be representing 𝗔𝗔 Sonipat, and we'll be our speakers for today. So So let's start off with the quote of the day. It is not necessary to be perfect.
It's our imperfections that makes us unique. कि अगर हर बंदा परफेक्ट रहेगा तो फिर दुनिया में फिर एक ही जैसे लोग रह जाएंगे। ये हमारे imperfections ही है जो हम लोग को यूनिक बनाते हैं। Very well said, Rishi. Thanks for that quote. So let's move forward. So this would be a webinar outline. For first, we would be talking about the mistakes to avoid, and we'll give some reason for the two rather famous companies that failed in India, and then we would be covering the fundamental concepts where we would be spending most of our time, and then we'll talk about stages of a growing startup. So in this, so let's just begin. Okay, so one of the most important question here is what is entrepreneurship? What is it all about? Entrepreneurship is basically a process of starting a new enterprise. मतलब एक तो प्रोडक्ट बनाना जो कि लोगों के लिए वैल्यू रखता हो, ये इस पे टाइम एंड एफर्ट डालना नेसेसरी हो। हम लोग इसके जो एंटरप्रेन्योर होगा वो सारे फाइनेंशियल रिस्क बियर करेगा, इसके लिए ऑल द डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस ये सब बियर करेगा वो विद एन इंटेंट टू मेक प्रॉफिट। द नेक्स्ट थिंग इज हु आर एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स एक ऐसा आदमी है जिसके पास एक तो यूनिक आइडिया होता है, जो कि इनिशिएटिव लेता है एक तो नया वेंचर डेवलप करने के लिए। वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है एंड इज रेडी टू बियर ऑल द रिस्क्स एंड टेक ऑल द नेसेसरी डिसीजंस to provide products and services that has value to the consumer. What is an enterprise? An enterprise is the business venture started by the entrepreneur to solve the worldly problems. There are certain qualities an entrepreneur must have, like a high degree of commitment. He must be highly committed to the enterprise he is working upon. He should have a high energy level. Everyone should be inspired by him. He should be foresighted. उसको पता होना चाहिए कि आगे उसको कंपनी को कहाँ कहाँ लेके जाना, उसको एक तो वेल डिफाइंड एम होना चाहिए। डिज़ायर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ऐसा कई बार हो सकता है कि उसके साथ कोई ना खड़ा हो, पर उसको खुद में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे कामों करना आना चाहिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ही मस्ट बी अ वेरी गुड रिस्क टेकर, उसको रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस करना अच्छे से आना चाहिए। उसमें लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए कि बंदा लीडर होना चाहिए ताकि वो औरों को अपनी टीम को लेके साथ में चल सके। उसको अचीवमेंट ओवर मनी वैल्यू करना चाहिए कि पैसे तो भी बाद में आ जाएंगे, पर पहले हम लोग कुछ अच्छा करना है। उसका माइंडसेट ओपन होना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। उसको कभी भी छोटा नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया में हर कुछ अचीवेबल है इफ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट। सो बीइंग दिस सेड, लेट्स मूव ऑन। So now we will be covering the mistakes. So Rishi would be explaining all the mistakes. So go on, यस, Rishi. सो कंपनी बनाने से पहले वी शुड स्टार्ट टू लर्न अबाउट सम मिस्टेक्स वी शुड अवॉइड। कि ज़्यादातर कंपनीज अर्ली फेजेस में ही फेल कर जाती हैं बिकॉज दे मेक सम कॉमन मिस्टेक्स। तो अगर हम लोग को ये पहले से पता होगी, हम लोग को पता होगा कि क्या गलती हमको नहीं करना है, तो हम लोग फिर अपने जो भी स्टार्टअप आगे अगर हम लोग करने जाएंगे वो हम लोग बचा सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स विच मोस्ट ऑफ देम मेक। लाइक कुछ लोग हैं जो लोग इंटेंस कंपटीशन से कोप अप करने का कोई प्लान नहीं बनाते। जैसे कि आज मार्केट में कोई एक चीज चल रही है, देयर इज एन ऐप फॉर समथिंग यू आर गोइंग टू डू, तो आप सिमिलर ऐप बनाते हो बट वो मार्केट लीडर ऑलरेडी प्रेजेंट है उस उधर, तो आप उससे कोप अप कैसे करोगे? हाउ विल यू ओवरथ्रो देम? इसका एक तो पहले से एक तो अच्छा से एक तो प्लान बना के रखना पड़ता है। lack of funds, whenever you get into a business, earlier the business model is not profitable, you need to know how to bear the losses in order to gain a high reach। अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे तो आप वो लॉसेस बियर नहीं कर पाएंगे, उसके वजह से आपका कंपनी रीच नहीं कर पाएगा उतना लोगों को, तो उसके उसके कारण आपका कंपनी फेल हो सकता है। फ्लॉज इन बिजनेस मॉडल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लाइटली लेते हैं लोग कि बिजनेस मॉडल है कि कौन सा आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए, आपको मार्केटिंग किस प्रकार करनी है, आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे रखनी है अपने, आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सब बिजनेस मॉडल के अंदर आता है। अगर आप शुरुआत में ये सब नहीं सोच के रखेंगे तो फिर आपका कंपनी फेल हो सकता है। तो So let's move नेक्स्ट ahead. स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बताएंगे कि कौन कौन सो इसमें हम लोग कुछ स्टार्टअप फेलियर्स के बारे में बात करेंगे, लाइक जबोंग एक तो कंपनी थी जो कि कपड़े बेचती थी और वो एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रही थी, बट मार्केट लीडर्स लाइक फ्लिपकार्ट और अमेजोन से compete नहीं कर पा रही थी। हालांकि फ्लिपकार्ट ने जबोंग को एक्वायर कर लिया था, बट स्टिल वो उनके सेल्स इतने अच्छे नहीं हो रहे थे बिकॉज उनके ऑफर्स उतने अच्छे नहीं थे। दे कुड नॉट बियर द लॉसेस विच दे हैड टू इनकर समहाउ। उनका उनका मिंत्रा के साथ कंपटीशन नहीं बैठ पा रहा था, तो मिंत्रा इवेंचुअली वन ओवर जबोंग फेल कर गया। अबाउट हाइक, वैष्णव? So, as you all remember, Hike was a messaging application, but at that time, WhatsApp was ever growing. So, competing with WhatsApp at the time, I would say it would have been a win-win situation. But Hike tried to do something that was out of the box. At that time, while WhatsApp was being simple, Hike was trying to be a super app, which was something that market did not require and market could not even handle. So so they lost customers over time, and just like that came Instagram later on and Snapchat. So in the process they lost customers and the competition grew ever stronger. So now Hike is gone, unfortunately, but Hike would have been, if Hike would have been successful, it would have been India's number one messaging app. Yes, Dipankar, Hike was one of the best apps, but it was too complex, so Yeah. that led to its downfall, right? So after we talked about the mistakes, let's turn our heads to fundamental concepts. So, in the following slides, we'll be talking about 6 fundamental concepts that, like unique selling proposition, business models, co-founders and teams, and these three. So, without wasting any more time, let's move forward. So, first fundamental topics is unique selling proposition. Well, a unique selling proposition is a marketing strategy wherein you convey a message to the consumer about how your brand or your company is superior to your competitors. This is the basic crux of USP. But also one thing, that what you sell does not have to be unique, but the message you choose to focus on has to be unique. For example, you can be a real estate agent, but there are only few real estate agents who rule a particular market in a particular area. So although there are so many real estate agents, but if you have a unique USP or USP, you would you would have the leading edge in the market. So I'm going to give you the similar situation of a real estate agent. Let's assume you are a real estate agent, and for to gain more customers, you decide to call people from the real estate database, and you call and call and call, but most of them would say one thing, that I already know a real estate agent. But how do you counter this? How do you counter this if they already know a real estate? How do you be better? How do you make them choose you over the competitors? So to explain this, I have made this. So let's assume that you don't have a USP. So first thing that would happen when you're, let's say you are pitching something, pitching your services. So the first thing that would come to mind, that you would be insecure, you would be in your head, and you would be thinking like, is are they even listening? Am I convincing enough? Should I lower my prices? So things like these would always bother you, and then you'll be start thinking about yourself and not about how you would solve their problems. So we have a comment. I have a doubt. WhatsApp was an American app, and what is it? Rishi, could you please answer that? Rishi? Yes, I'll answer it in the chat box. Please continue. All right. So coming back to USP, so the first thing is you'll be insecure, you'll be in your head, and you would be rather thinking of yourself, how they are not listening to you. Well, where you could be.
thinking about how you would solve their problems. So that's a bummer. So second thing is you'd be hoping that they would come to you, they would choose you over the competitors. While while hope is a good strategy if your customers are your friends and family, but then you're only limited to that circle. But if you want to be competitive, hope is not a good strategy. And if you're hoping and if you're insecure, if you don't have a USP, you don't have anything unique about you, you're just another realtor. So there's nothing unique about you. But let's look at the counter side. If you have a USP, firstly, you will talk with confidence. You will know what to say, what to do exactly. And you will know what the customers would ask you if you know what your business is about and what is unique about you. So in that process, you would also figure out what questions customers are more likely to ask. You will be the one who will be making the calls, and you'll be the one guiding the customers. Secondly, if you know what is different about you and how unique are you, you will talk with certainty. You will attract more people with that if you know your numbers, how good are you, or how well or how better you are against the competitors, you'll talk with certainty. In this case, you'll talk like a knowledge broker. You know everything, you know every fact. And knowledge broker, Yes, go on, Vaishnav. give me a moment. Yes. Okay. So please keep बताते रहिए हमें चैट बॉक्स में कैसा लग रहा है आपको सेशन. Please be active in the chat. So sorry about that. So let's figure out in this situation, if you were to formulate your USP, how would you do that? Well, the first thing is to ask what do consumers want. So there are three aspects. First, can you save your customers time? Can you save them time, like on real estate businesses or time consuming business? So if you can save your customers time, you'll already have a leading edge against your competitors. So next thing is, can you make them money or can you save your customers more money than the competitors? If yes, well, congratulations, you're already above your competition, and that can be your USP. I'll tell you how. So next thing is certainty. Okay, certainty, like I said in this section, that certainty is attractive. If you are certain about your services, you'll definitely look more attractive, and if you talk with certainty, your USP would be more. Your USP would get you more customers. Give me another second. I just need to fix this. Sorry for that inconvenience, everyone. So till now we have learned what mistakes we must not do and some fundamentals about entrepreneurship and what is a USP. And this is a case study presented by Vaishnav. I guess he's back. Okay, continue, Vaishnav. So now that you know what things the customers need, so in the chat box, can I expect some some examples of USP that you guys can formulate? Like अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, you need to have some certainty. Let's say we sell our houses faster. That can be example. So could you guys come with some examples of a USP in this case? I'll wait for your comments in the chats.
So I don't see any comments. So let me just. So the question was, Yash, what if you are a real estate agent and you want to start a new business? You are new into real estate. So what will be your USP? Okay, Jatin. Nice answer. Creamy layer customer base. Okay, we should make a customer base from the creamy layers. हम लोग को उनको अप्रोच करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रीच बढ़ाना चाहिए. Nice answer. But this cannot be a USP. Catchy phrases can also not be a USP. So Vaishnav, go on. Let's see. So like I spoke about, these are the things that our customers want when it comes to real estate agent. Can you save them time? Can you save them money, or can you make them more money if they're selling their houses? So my example of USP in this situation is, we sell X times more houses than any other broker in this area. So you're directly countering the other brokers in the area. And hear me out. Even though in this particular area you've sold 5 houses and the others have sold one, even though those five are the only 5 houses you have sold in your entire career, this can still be your unique selling proposition, and you can still get more customers from this. So something. So again, USP is a message that you must tell your customers, and this is a message that would give inflict confidence in your customers and tell them that they should choose you. Another example could be, we sell X times faster than any other competitors. So again, the time factor. If you can save your customers time, you can win more customers. So this can be a message, a USP. So next example would be, we save our clients more money than others. We save our clients more money than others. So obviously there can be, you can attach more proofs. This is just one example of a USP that you can show. And lastly, I would say, we sell our houses for X percentage more. Again, the numbers are important. The numbers show how certain you are. X percent more than a competition. So this would show that you make them more money, and the numbers would show that you're certain about it. Your certainty matters a lot. So that was examples of USP in the real estate case. But we want to start a company. So how would we make our USP there? So first, let's talk about what a USP shouldn't be. Well, I think I saw some comments that saying USP can be offer or lower prices, but well, no. A USP cannot be a specific offer. Let's say 20% off on Flipkart. That is not a USP. That is not something unique. Anyone can replicate that. So a USP cannot be a specific offer. Also, a USP cannot be a header copy of a website, your website, or your company's motion. That is surely unique, but that is not your USP. That is not something that you would sell with. Correct. So now that we know what a USP shouldn't be, let's talk about what a USP should be. So uh, these are the factors that would help you how to formulate your own USP. So firstly, we should list out all the differentiators factors of your brand and what you sell, and you have to get specific. नाउ इसके बारे में जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ब्रांड थोड़ा भी डिफरेंट करता है ना, वो सब लिखो, छोटी से छोटी चीज. Even in your manufacturing process, if you package a little differently, that can also be a USP. So list it down. Second Yes, point is Tanish. researching your competition, and looking for gaps to introduce a product. It is something everyone should do. If your competition has a certain gap, something that is missing that you can do, and that would help the customers improve their
provide a solution to their problems, there you can introduce your product. So last thing is compare your most unique factors. जो भी आपको लगता है आपके बारे में यूनिक है, वो ऑडियंस की नीड से कंपेयर करो और अपना यूएसपी उस तरीके से बनाओ कि वो यूनिक चीज आपके ऑडियंस की नीड्स की फॉलो करे. तो these three are the points that would help you making your own USP. So I think we are all done with USP. Let's go further and let Rishi would talk about business models. Yes, okay. So now that we have formulated our USP, let's look at the business models we should work upon. What is basically a business model? It is a plan for the successful operation of a business, identifying the sources of revenue, the intended customer base, product, and details of the financing model. आपका revenue कितना है? Who is your target audience? And आपका pricing model क्या है? This basically comes under business model. सो कुछ कॉमन बिजनेस मॉडल्स के कैटेगरीज हैं जैसे B2B एंड B2C. सो आई स्टार्ट ऑफ विद B2B. ये ऐसा मॉडल है जिसमें सेलर प्रोडक्ट्स अपने ही जैसे एक तो दूसरे बिजनेस को बेचता है. इन दिस मॉडल अ कंपनी सेल्स देयर प्रोडक्ट्स और मेक्स ट्रांजैक्शंस विथ अदर कंपनीज. लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट इंफोसिस क्या करता है, वो दूसरों के लिए टेक सोल्यूशंस बनाता है. सो इंफोसिस क्या करेगा, एक तो दूसरी कंपनी के पास जाएगा, मे बी अ बैंक, और उनसे कहेगा कि आई विल मेक एन ऐप फॉर यू और आई विल मेक अ वेबसाइट फॉर यू. सो ये कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. इधर के कॉस्ट बहुत हाई होते हैं, द मनी इन्वॉल्व इज वेरी हाई. सेम विथ अलीबाबा इज अ B2B मार्केट प्लेस. यहाँ पर कुछ कंपनीज सेलर्स रहती हैं और कुछ कंपनीज बायर्स रहती हैं. सेम विथ इंडिया मार्ट, ये लोग आपस में डील्स करती हैं और क्वांटिटीज बहुत हाई होती हैं, होलसेल मार्केट जैसा होता है. Whereas now coming towards B2C, business to consumer, it is also called direct to consumer, D2C. इसमें this is a very niche thing, it is retail e-commerce. यहाँ पर क्या होता है कि एक कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स को टारगेट करती है. इसमें मेन चीज है कि हम लोग को अपना रीच बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है ताकि हम लोग कस्टमर्स तक पहुंच सके. It takes sales between business and consumers. Most of the transactions done now are online. आजकल ऑनलाइन में ही सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. यहाँ पर जैसे हम लोग ऊबर की बात कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स की बात कर सकते हैं. जैसे ऊबर है, एक एक कस्टमर को टारगेट करता है, वो उनको ऑफर्स देता है, अलग अलग वाउचर्स कोड देता है ताकि वो एक एक कस्टमर जाके अपना वो गाड़ी ऊबर से बुक करे, उनका रीच बढ़े. सेम विथ मैकडोनल्ड्स, वो एक एक यूजर को टेंड करता है. ओके, सो वैसे B2B एंड B2C आर वेरी ब्रॉड कैटेगरीज एंड उसके अंदर सब कैटेगरी में काफी सारे बिजनेस मॉडल्स आते हैं. राइट दीपांकर, रेज पे. Okay, so moving on, freemium or subscription models. These are not very different, but still, talking about freemium model, यहाँ पर कंपनीज एक तो फ्री में हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक यूट्यूब. वो लोग हमें फ्री में वीडियो स्ट्रीम करने का मौका देती है. और अगर हम लोग कुछ पे करें, इफ यू बाय देयर सब्सक्रिप्शन ओवर दिस, दे विल गिव अस एडिशनल फीचर्स, लाइक वो एडवर्टाइजमेंट हटा देती हैं और कुछ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी रहते हैं. इसमें हमारी कंपनी को क्या करना है, इफ वी इम्प्लीमेंट दिस प्रीमियम मॉडल, हम लोग पहले तो अगर जब फ्री वाले मोड पे काम कर रहे हैं तब हम लोग एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत इरिटेट भी करती हैं एडवर्टाइजमेंट्स. उसके ऊपर वी कैन ऑल्सो शो कि इफ यू डू नॉट वांट दिस एडवर्टाइजमेंट्स, वी कैन शो यू सम, यू कैन बाय आवर सब्सक्रिप्शन मॉडल विच इज अ वेरी चीप मॉडल ऑब्वियसली. और इसमें भी हम लोग डायरेक्ट कस्टमर्स को टारगेट करते हैं. सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑन द अदर हैंड, इसमें हम लोग को फ्री कंटेंट नहीं मिलता है और ये ईयरली रिकरिंग सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है. इसमें हम लोग को टारगेट ऑडियंस को पकड़ के रखना पड़ता है. लाइक मान लीजिए आपने कुछ एक, आप गाड़ी बनाते हैं, देन यू कैन सेल कार्स, आप गाड़ी बेच सकते हैं. बट इफ यू आर इन दिस सब्सक्रिप्शन मॉडल, आपको अपना कस्टमर को बार बार वो खुश करके रखना. स्टेइंग देयर, दे आर बाइंग your subscriptions every month, they are renewing their subscriptions every month. Okay, so moving on, Vaishnav will explain So about coming co-founder and to, teams. yeah, thank you. So next topic would be co-founder and teams. So while starting a company,
let's say you know you have an amazing idea. Let's say you have $1 million idea, but you don't know how to put it out there, or you don't know how to make an app, like $1 million app idea. But you don't know how to make an app. You're a business person. Let's assume that, and but you know you have an idea, but you don't know how to make an app. So in that case, a tech co-founder would bring much Handy. more value to the table. So at this stage, these are the most common questions that are asked. Do I really need a co-founder? Should I, or why should I get a co-founder? Can't I just hire a person? So, well, for the first question, I would say yes, you do need a co-founder. It is highly recommended to have a co-founder in your team. Maybe you want to go solo, maybe you are confident enough, but it is recommended that you have a co-founder with you, because there are a lot of reasons that I'm going to talk about why you should have a co-founder, and I'm going to tell you about how hiring a person is not beneficial for you. So, coming to the importance of a co-founder, let me give you an example. Let's say you are a business person. Let's say you come from a business background and you make an app, like the same example that I just gave you. You have an idea, $1 million idea, but you don't know how to make an app. So in this case, a technical person would add much more value to the company. So in case like these, where you don't have have a certain expertise in a field, that that is a gap that is filled by a co-founder. Now, if you're a business person, a tech co-founder would fill in the gap of making the app. So the importance of co-founder is their expertise. And another thing is investor support. Nowadays, a lot of investors prefer investing in a co-founded company rather than a solo run company. Now, why is this? Because investors know how difficult can it be to manage something if you're going solo. And there are a lot of cases where solo run startup have failed almost 5 years into the business because they were solo run, and it was very difficult to manage it. And but in reality, bringing in a co-founder only brings you more advantages. The only downside is when you don't get along with your co-founder. That's the only downside of having a co-founder. If you do not get along with him. So those were the importance of co-founder. Now let's talk about roles of a co-founder. So while looking for a co-founder, you should have the founding team strong enough that they have the capacity to make the first $100,000 of revenue without hiring any external talent. They should be able to earn that revenue for the company without hiring a single external talent. So that should be a capacity of a founding team, of a co-founder. So now with this, let me give you an example of a product person plus a marketing person. So let's say a product person knows and builds a product, and he can even manage the manufacturing, mass manufacturing in the future maybe. But somewhere he would struggle is distribution and marketing. He he cannot sell his product faster, but in this case, a marketing person would help his business grow tenfold. Now, the example for this particular combo is the audioware company Boat, where Aman Gupta and Sameer Mehta co-founded Boat together. Aman Gupta is the marketing person and Sameer Mehta is the product person. So this is an example of how co-founders can add value to your company. And like Aman Gupta is a very good entrepreneur when it comes to marketing, and Sameer Mehta is the product manager of the company. Another thing that co-founders should bring is new ideas and new solutions. लेट्स से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और अब आप और आपके को फाउंडर साथ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सो
what should really happen is they both the co-founders should bring two different solutions to the table. This is a this is really important. अगर आप दोनों ने सेम सोल्यूशन निकाला तो वो दो दो अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है, and that is not a good thing. But if your co-founder is bringing in a new solution, then आप एक और एक मिलके 11 बन सकते हो. So bringing in new solutions and new ideas is a very important role of a co-founder. So these were the roles of a co-founder. But what if you hire instead? What are the problems that I'm going to face if I hire instead? Well, firstly is money. You don't have enough money in the early stages of a business, so you cannot really pay the salaries. And next thing is credibility. During the early stages of a company, you don't have much to show about yourself. Your credibility is very low, and the attraction is much lower. So it is much difficult to attract people. And let's say in the previous example of the business person and the tech person, he could have just hired a tech person, correct? He could have just hired someone to build the app. But uh, the salary of a CTO, the chief technical officer, is nearly $150,000 or around that annually. So you can imagine how difficult it would be for a company to pay in early stages that amount of money. So that salary is a big thing. You don't have the money to pay. And next thing, working overtime. In the early stages, it is very common for startups to work overnight and hustle really hard in the early stages. So an external agent would not feel the emotional attachment and would not be willing to work overtime. So this is something that you should keep in mind, that they won't be working for you like that. I would like to add something, Vaishnav. Yeah. लाइक यू सेड कि को फाउंडर्स इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉय से. अगर आप किसी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसको वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा आपकी कंपनी से. उसको कंपनी के फायदे में अपना फायदा नहीं दिखेगा. उसको अपने पेमेंट अपने टाइम से मिलते रहेंगे और उसको कंपनी से उतना अटैचमेंट नहीं रहेगा. वेयर एज अ को फाउंडर, उसको पता है कि अगर वो ज़्यादा काम करेगा कंपनी के लिए तो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ के साथ उसकी भी ग्रोथ होगी. Well said, Rishi. So let me talk about how do you find a co-founder. Now, if you're convinced enough with me, so you would want to find a co-founder, but how do you find a co-founder? So obviously, you will have to go out there and search your network. So if you go out there, this is point number one: dating like a recruitment. So when you're meeting the possible co-founder, you should really take your time. Go on multiple coffee sessions with your possible co-founder and really get to know them. You should get to know them, their values, their goals, their future, how they see this company. And you have to be very clear about your idea. You have to sell your idea as well as the business opportunity that you bring to the table. So that he can get a clear sense if he were to join you. So would it does it match with his values? Does it match with his opinions? So that selling of idea and the opportunity is very important. You have to be clear about it. You have to be certain about it. Yes, Third Venches, thing is, co-founders should share the same goal. They should be able to resonate with themselves. कि अच्छा कनेक्शन yes, होना चाहिए. They should. yes, like I mentioned in the previous slide, the only downside of a co-founder is when you don't get along with them. So if your co-founder does not see the same goals, I'm sorry, then you would have conflict of interest among your co-founders, and that conflicts has led to downfall of many companies in the past. So finding a co-founder with similar goals, similar values, or even better, same values is very important.
Third thing, show them that you embrace your feedback. Embrace feedback of any or any feedback. So let's say you sell them the idea and solutions. Okay, you have a solution to a problem, and well, they might have a different solution to it as well. So if they provide that, so you have to embrace it. Like, you cannot be sitting there expecting they should not bring any changes to the table. Their feedback is as valuable as when they join you as a co-founder. So showing that you embrace feedback is very important. It makes you so. The fourth thing is realizing that co-founding is a 7 to 10 years of commitment, which surprisingly is more than the average American marriage. So co-founding is like a marriage. You have to you have to work with each other and work for each other and protect your company like a marriage. So realizing that co-founding is a 7 to 10 year commitment is very important, as your company is your marriage, and apart from that nothing else matters for you. So I guess that's all for co-founding and the founding team. Next, we will talk about marketing, and Rishi will take Okay, over. so next we'll talk about marketing, but before that I'd like to add कि हम लोग अभी fundamentals के बारे में discuss कर रहे हैं, and after that we'll be going to discuss about stages of a startup and when to use these fundamentals. So stick till the end with us. So, okay, coming back to marketing. What is actually marketing? कि आपने USP बना लिया, you have a business model, you have a team. Now what? You have to reach the desired audience. हम लोग को उन तक पहुंचना है, हम लोग को एडवर्टाइज करना है, हम लोग को स्ट्रैटेजीज बनानी है ताकि हमारा कम से कम पैसा खर्चा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले जो कि हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें. उसके लिए there are certain marketing strategies which I'll talk about in a minute. Vaishnav? Okay. So these are the common strategies which we can use in order to reach more people. जैसे सबसे पहले आता है वायरल मार्केटिंग. जैसे मान लीजिए कोई एक तो ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, समथिंग इज गोइंग वायरल, सो अलॉन्ग विद दैट यू आल्सो मेक सम कंटेंट रिगार्डिंग दैट वायरल स्टफ. उससे उनके साथ साथ आपका भी स्टफ वायरल होगा. इन सब चीज़ों में रीच बढ़ने में एकदम समय नहीं लगता. यू कैन गेट अ मिलियन व्यूज ऐसे. नेक्स्ट थिंग इज पब्लिसिटी स्टंट्स. ये थोड़ा सा अनयूजुअल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बट पीपल यूज इट एनीवेज. मोस्टली इन केस ऑफ सिनेमाज, they make some controversies, or like if you remember Elon Musk's controversy with the Cybertruck case, जिसमें उसका गाड़ी के शीशा का कांच टूट गया था. उस केस में अपने आप पब्लिसिटी होती है, अपने आप मार्केटिंग मिलती है उन्हें. मीडिया खुद विदाउट एनी मनी कवरेज करता है आपके लिए. आप सब जगह फेमस हो जाते हो. सो यू गेट द रीच, पीपल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. यहाँ पर क्या होता है कि let's say you are trying to sell books, so you design your website in such a way, you use such keywords कि अगर कोई बुक खरीदने चाहे तो बुक का नाम लिखे और आपका वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाए. You want to rank among other websites so that people will automatically click at your site and you will get more reach. Another thing is search engine marketing. जैसे आप मान लीजिए कोई एक चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट लिंक्स आते हैं. तो उस एडवर्टाइजमेंट लिंक्स के लिए वो लोग पे करते हैं गूगल को, तो आप वो भी करके अपना जो लिंक है उसको ऊपर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑफलाइन एड्स, द ट्रेडिशनल एड्स. तो ज़्यादातर ये पहले यूज़ होता था, आजकल काफ़ी कम हो गया है. इसमें क्या होता है, हम लोग बिलबोर्ड्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, पैम्पलेट्स बंटवाते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में अपने बारे में लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं. ये ज़्यादातर ओल्डर जनरेशंस के लिए, जो लोग 50-60 साल के हो गए, अगर वो हमारी टारगेट ऑडियंस है तो दिस इज द बेस्ट वे वी कैन टारगेट देम. ओके, नेक्स्ट स्लाइड वैष्णव. ओके, सो सम अदर स्ट्रैटेजीज आर लाइक इंजीनियरिंग एज मार्केटिंग. मान लीजिए कि यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम, तो आप उसके लिए कोई ऐप बना दीजिए, या फिर इंजीनियर समथिंग विच सॉल्व सम प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एंड यूज दैट टूल एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. जैसे आजकल लोन्स में बैंक्स बहुत घपला करते हैं. दे
दे चार्ज मच मोर इंटरेस्ट। तो उसके लिए कुछ बैंक्स आजकल लोन कैलकुलेटर ऐप बना देते हैं, सो दैट यू कैन एट द कंफर्ट ऑफ योर होम्स आप देख सकें कि आप कितना लोन ले रहे हैं और उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, क्या हो रहा है। तो उस केस में वो ऐप में ही आपको लिंक्स मिल जाएंगे उस लोन को लेने के लिए। एक सेकेंड, यस गौरव सिंह, राइट, यू कैन ऑल्सो यूज इन्फ्लुएंसर्स टू मार्केट फॉर यू, बट दैट इज अ बिट कॉस्टली, सो अर्ली फेजेस में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कमिंग बैक टू दैट लोन ऐप, तो उसमें आप लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स चेक करते हैं, वहीं आपको लिंक्स मिल जाती है उस ऐप के लिए, उस बैंक के लिए, वो बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए। तो वो लोग उस ऐप को एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट कम्स वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसमें आप अपना प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाते हैं कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट एक बार यूज करे तो फिर वो अपने आप ही दूसरों को मार्केट करे आपका प्रोडक्ट। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, दिस इज रियल मार्केटिंग, कि आपको पैसा नहीं खर्चना पड़ रहा है, आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो खुद ब खुद आपके लिए मार्केट कर रहा है। ऑफर्स एंड सेल्स, ये वाला मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज होता है ताकि आपके जो प्रीवियस कस्टमर्स हैं वो आपके पास बने रहें। ज़्यादातर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर डोमिनोज, ये सब जगह पर ये ऑफर्स एंड सेल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज लोग बार बार रिविजिट करते रहते हैं उस साइट को कि आज ये ऑफर आने वाला है, आज ये सेल आने वाला है, एंड दे सी आइटम्स दे वांट टू बाय एंड देन दे बाय इट। नेक्स्ट इज अफिलिएट मार्केटिंग। इसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्यूज पहले से होंगे, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। जैसे नाउ यू हैव टू मार्केट सम प्रोडक्ट, आपने एक तो किताब बेचना चाह रहे हैं, आपको मार्केट करना है उसे, बट यू आर नॉट दैट, आपका पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा आपको, सो व्हाट विल यू डू, यू विल हायर अफिलिएट्स टू डू द जॉब। वो लोग फ्री में आपके लिए मार्केट करेंगे और वो लोग बस इतना सा लेंगे कि जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज वो लोग ले लेंगे। 1 सेकेंड, हाँ, दे विल टेक सम परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू यू जनरेटेड, सो उससे आपका कैपिटल नहीं लग रहा है, अ स्मॉल शेयर ऑफ योर रेवेन्यू इज गॉन, बट स्टिल यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ऑन मार्केटिंग एट ऑल। नेक्स्ट इज रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। अब आपको कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदने जाना होता है, सो व्हेनेवर यू विजिट द वेबसाइट, और जब आप कोई ऐप भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं कुछ भी, तो आप चेक करते हैं उसका रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स। अगर वो अच्छे होते हैं, अगर उनकी रेटिंग 5 स्टार होती है या 4.5 स्टार होती है, तो ऑटोमेटिकली एक तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप हो जाता है कि अगर ये सामने वाले को इतना पसंद आया तो ये मुझे भी पसंद आएगा। सो दिस इज हाउ आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग इसके थ्रू भी कर सकते हैं। सो अगर आप ये सब यूज कर लें तो आपकी रीच बढ़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी कंपनी में सारे चीजें यूज करनी है, यू कैन यूज सम, और आप इनमें से कुछ चैनल्स यूज कर सकते हैं ताकि आपका ग्रोथ बढ़े। ओके, मूविंग ऑन। Well said, Rishi. So next, I'll be यस covering वेंचर्स, investment stages and investors. Sorry, am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। Yeah. So first, let's learn the difference between a startup and a business. And this may seem strange because startup can be seen as a business, but let me tell you, they are slightly different, or maybe majorly different. But the difference is, a business is not meant to be big, whereas a startup is meant to be big from day one. So, example would be if you have a local shop where, well, that's not going anywhere, is it? After reaching a certain market cap in that local area, it won't grow much, but a startup grows forever. So that's the key difference between startup and a business. And let me tell you, 90% of the businesses are not fundable. Like आपके पास local shop है, and you want to expand, you want to open a branch in the next city, you won't get startup funding for this. आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, आप चाहे तो लोन ले सकते हैं या फ्रेंड्स और फैमिली से ले सकते हैं। सो ये एक डिफरेंस है कि बिजनेसेस are not fundable, but startup is very different because they are meant to grow and they can be funded. So we will talk about why would an investor invest in your company. Well, because they need some return, because their money would be growing in the longer run, they would invest in you. So let's say they expect you, or they analyzed you, and they expect कि आप उनके पैसा का रिटर्न दे पाएंगे, तो वो आप में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता
कि आपका बिजनेस क्या है। अगर आप उनका पैसा को रिटर्न कर पाए तो वो इन्वेस्ट करेंगे। सो लेट्स लुक एट द स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। द फर्स्ट एंड द वेरी बेसिक स्टेज इज द बूटस्ट्रैप स्टेज। शार्क टैंक में काफ़ी बार सुना होगा अब तक आपने, बूटस्ट्रैप। बट वो होता क्या है? बेसिकली बूटस्ट्रैप में आप खुद का पैसा लगाते हैं, चाहे फ्रेंड्स या फैमिली से ले सकते हैं या सेविंग्स उठा सकते हैं अपनी, लेकिन ये आपका पैसा है जिसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं उठा रहे एक्सटर्नली। इसमें जनरली स्पीकिंग इसमें दो तरीके की कंपनियां फॉर्म होती है, प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी। तो प्रोप्राइटरशिप में आप इकलौते होते हो, पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये दो तरीके की कंपनी जनरली हम लोग को बूटस्ट्रैप स्टेज में दिखती है। बट अगर आपको जब इन्वेस्टमेंट उठाने की बारी आती है, सीड फंडिंग, तो ये दोनों जो कंपनी के टाइप्स है ना, ये दोनों को कोई फंडिंग नहीं मिल सकती। आपको पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, फिर आपको प्राइवेट लिमिटेड में लिस्ट होना पड़ेगा, आपको अपना कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप सीड फंडिंग या उसके आगे जो स्टेजेस है उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो प्री रिक्विजिट्स वही थे कि आपको प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, आपके पास एक बेसिक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए, या मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होना चाहिए, और आपके पास एक अर्ली टीम रेडी होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हो एक सीड फंडिंग राउंड के लिए। तो सीड फंडिंग राउंड में जनरली एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। नाउ एंजल इन्वेस्टर्स कौन है? एंजल इन्वेस्टर्स आर बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्च्यून बना लिया है, and now they have experience as well as the money to fund startups, and in this way they are also giving back to the to the new entrepreneurs that are coming in the market. So in India generally 5 to 30 lakhs per angel is expected, which is also consistent in Shark Tank India if you look at the numbers. So Shark Tank में जो भी है, they are basically angel investors. So let's go further. Next is series funding. Now this is where the big money comes in, the serious money. So यहाँ पे आपने ऑलरेडी सीड फंडिंग लेने के बाद आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर लिया, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल आपका तैयार है, आपके पास काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय बेस है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हाई है, काफ़ी ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी है आपके पास पैसे आ रहे हैं। तो इसके बाद अगर आपको एक्सपैंड करना है, दिस इज व्हेन सीरियस फंडिंग वुड हेल्प। सो सीरियस फंडिंग में मल्टीपल राउंड्स होते हैं, ABCD, कुछ E और F तक भी जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स जो होते हैं, लाइक सिक्वोया कैपिटल हो गया, लाइटस्पीड वेंचर पार्टनर्स और नेक्सस पार्टनर और सेफ पार्टनर्स अगर आपने सुना होगा तो these big companies are the ones who invest in you, and that's how you get serious funding. And the role for the different rounds is obviously एक बार पैसा उठाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे आपने सीड फंडिंग उठाने के बाद सीरीज फंडिंग में आना पड़ा आपको, वैसे ही सीरीज फंडिंग के जो मल्टीपल राउंड्स है उसमें भी आपको जाना पड़ता है। एक बार पैसे उठाया, फिर नेक्स्ट टाइम पैसे और उठाने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो ABCD का फंडा है ना, हर सब्सिक्वेंट स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट का पॉट होता है वो बड़ा होना चाहिए, जनरली स्पीकिंग बढ़ना चाहिए, और कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ना चाहिए। तो ये है पर्पस राउंड्स ऑफ डिफरेंट राउंड्स ऑफ सीरियस फंडिंग. That is why it is called serious funding. Well, that was pretty straightforward and self-explanatory. So if I tell you some numbers, in India Series A funding में you would expect कि $1 से $3 million, $1 से $3 million, like I'm talking about US dollars, वो Series A में आपको मिलना चाहिए in India. This is general numbers. So B में वैसे ही $5 to $10 million हो जाएंगे, C में वैसे ही $10 से $30 million हो जाएंगे, एंड D में वैसे ही $30 to $100 million हो जाएंगे. तो देखो, जैसे जनरली मैं बोल रहा था ना कि कम इन्वेस्टमेंट का पॉट बढ़ना चाहिए, जनरली पॉट बढ़ता है. सो जब आपके पास इनफ सीरीज फंडिंग आपने उठा लिया, आपका कंपनी काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसके बाद जो अगला स्टेप है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPOs. आपने बहुत बार IPO सुना होगा न्यूज़ में या
Shivam Anand, my favorite shark would be Anupam Mittal. Well, so initial public offering में जो होता है, it is when a private limited company becomes public limited and the company is listed in a stock exchange. But ये stock exchange कोई भी stock exchange हो सकता है. Let's say सीरीज फंडिंग के बाद आपने एक्सपैंड किया दूसरे कंट्रीज में, इंडियन कंपनी होने के बाद आपने एक्सपैंड किया यूएस में, तो अगर आप यूएस के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हो ना, तो आपका कंपनी पब्लिक हो जाएगा. तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये होता है जब आप अपना पब्लिक को ऑफर करते हो अपने शेयर्स, अपने कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स आप पब्लिक को ऑफर करते हो पहली बार में, और पब्लिक आपका स्टॉक्स बाय करके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है. सो इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स कुछ होते हैं, जैसे जेबी मॉर्गन एंड चेस हो गया, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स. सो ये सब जो बैंक्स होती है, इनके थ्रू हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है. सो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस है जनरली 3 से 6 महीने लगते हैं. तो जब आप इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हो, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनी और द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, आप और इन्वेस्टमेंट बैंक मिलकर डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज ऑफ का कंपनी आपको बेचना है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, और साथ ही साथ प्राइस पर शेयर भी डिसाइड होता है. तो जब ये सब डिसाइड हो जाता है, परसेंटेज टू सेल, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस, ये सब डिसाइड होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो उनके नाम पे जो भी अमाउंट ऑफ कंपनी है वो उनके नाम पे हो जाएगा, उतने शेयर्स उनके नाम पे हो जाएंगे. फिर वो जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो शेयर सेल करता है मार्केट में. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू होता है सब चीज़ें, और इससे ही आईपीओ बोलते हैं. जब भी आप आईपीओ होता है तो जो भी मार्केट होता है, आप मार्केट का स्टार्ट आपको बेल बजाने का मौका मिलता है जो भी मार्केट होता है. तो बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है कोई भी कंपनी के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. यस. सो लेट्स समराइज हमने क्या क्या सीखा. पहला स्टेज होता है बूटस्ट्रैप, जहाँ पे आप खुद का पैसा लगाते हो, खुद का पैसा या सेविंग्स उठाते हो, फ्रेंड से लगाते हो. यहाँ पे आपका स्टार्टिंग कैपिटल बिल्ड होता है. तो जब स्टार्टिंग कैपिटल बिल्ड होता है आप थोड़ा काम करते हो, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करना चालू करते हो, आपका एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट होता है. फिर उसके बाद आता है सीड फंडिंग, जहाँ पे एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं. एंजल इन्वेस्टर्स आपका काम देख के आपको पैसा देते हैं. फिर उसके बाद जब आपका रेवेन्यू मॉडल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा और पैसे बनने चालू हो जाते हैं, तब आप सीरीज फंडिंग में जाते हो. तो सीरीज फंडिंग के थ्रू आप एक्सपेंशन करते हो, मार्केट बड़ा करते हो अपना. तो फिर सीरीज फंडिंग के थ्रू एक्सपेंशन होता है. फिर लास्ट स्टेज होता है आईपीओ, जहाँ पे आपका कंपनी पब्लिक हो जाता है. कोई भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको पब्लिक लिमिटेड होना ज़रूरी है. काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज अभी भी प्राइवेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पब्लिक होना ही चाहिए. बट वो एक बहुत बड़ा स्टेज होता है. लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी भी प्राइवेट है. तो ये ज़रूरी नहीं है, बट ये बहुत बड़ा स्टेज होता है. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड द इन्वेस्टमेंट स्टेजेस. सो नेक्स्ट ऋषि would take over patents. Okay, hello. So we have covered much, and patent would be the last fundamental we will be talking about. Okay, so patent क्या है? Patent is a type of document which protects the scientific inventions, which may be a product or a process, which shows some technical advancement over the pre-existing products or already known products. जैसे कि आपने एक तो चीज कोई मार्केट में फ्लोट कर रही है, मे बी अ कार और मे बी अ मोबाइल फोन जिसका कैमरा कुछ तो किसी तरीके से वर्क करता है, एंड यू एनहांस दैट ड्रास्टिकली. आपने बहुत अच्छे से उसको एनहांस कर दिया. देन यू डू नॉट वांट टू शेयर योर क्रिएशन एवरीवन, कि आप चाहते हैं कि आपका क्रिएशन है, सो यू शुड टेक द प्रॉफिट आउट ऑफ इट. देन यू पेटेंट इट. आपकी कंपनी का यूएसपी होगा कुछ, तो आप उसको नहीं चाहते कि लोग उसको कॉपी कर लें, दैट इज यूनिक टू योरसेल्फ, तो आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं. दिस इज अ वेरी एसेंशियल स्टेप, ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग रन में चले और कोई आपको ओवरथ्रो ना कर दे, आपका सेम टेक्नोलॉजी यूज करके कोई आपको ओवरथ्रो ना कर दे. नेक्स्ट स्लाइड वैष्णव. So let us learn what can you exactly patent.
पेटेंट आप दो चीज़ करवा सकते हैं, एक प्रोडक्ट और एक प्रोसेस। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोडक्ट फर्स्ट। लाइक मान लीजिए कि आज HIV एड्स की कोई दवाई नहीं है मार्केट में, सो इफ़ यू डिवाइस सम वे टू क्रिएट अ मेडिसिन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो आप उस मेडिसिन को पेटेंट करवा सकते हैं। देन यू विल हैव द राइट टू सेल इट और टू यूज़ इट और मार्केट करना, सब राइट्स आपके पास आ जाएंगे। नो वन विल हैव द राइट टू यूज़ इट विदाउट लेटिंग यू नो। उससे आप उससे कुछ कमाई भी कर सकते हैं। व्हाट अबाउट द प्रोसेस? लाइक मान लीजिए कोई एक तो कैंसर है, उसकी कोई एक दवाई को बनने में 20 दिन लगता है। देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस इन मेकिंग दैट मेडिसिन, बट व्हाट इफ यू डिवाइस अ मेथड कि वो 5 दिन में बन जाए, 2 दिन में बन जाए, देन यू कैन पेटेंट दैट मेथड कि उससे बहुत हाई टेक्निकल एडवांसमेंट आ रहा है ओवर द प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। उसके कारण आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। लाइक यू हैव डिवाइस दिस प्रोसेस, सो आप उसको पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके फायदे। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर फाइलिंग अ पेटेंट? इट शुड बी न्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो पेटेंट फाइल कर रहे हैं उसका पेटेंट तो पहले से नहीं है, पर बहुत लोग पहले से उसको यूज कर रहे हैं, बहुत लोगों को पहले से पता है, तो फिर आप पेटेंट फाइल करके बोलेंगे कि अब मैंने पेटेंट फाइल कर दिया, अब आप लोग यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई चीज़ बहुत ऑब्वियस है, लाइक खाने में चीनी डालोगे तो खाना मीठा होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इस डिश में जो कि प्री एग्जिस्टिंग है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीठा करके मैंने अपनी नई डिश बना ली है, सो नाउ आई विल पेटेंट दिस डिश। ऐसा नहीं कर सकते। इट मस्ट बी केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कि उसको इंडस्ट्री में बनाना पॉसिबल होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू वी शुड बी एबल टू मेक इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट हो रही हैं या फिर इट इज़ वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेरी सिंपल। ओके, so with this we come to an end of fundamentals and now we'll be talking about how to use them. हम लोगों ने fundamentals पढ़ लिया है, अब उसको स्टार्टअप में कब और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर कंपनीज मात खा जाती हैं कि स्टार्टअप चालू होता है बहुत छोटे से, फिर उसमें बहुत कुछ लगता है कि सही टाइम पे सही चीज़ एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, तब जाके वो बहुत बड़ी कंपनी बन पाती है। सो नाउ विल लर्न व्हेन एंड हाउ टू यूज दीज फंडामेंटल्स टू इम्प्लीमेंट देम इन ऑर्डर टू ब्रिंग आवर स्टार्टअप टू अ सक्सेस। Okay, so talking about the stages of startup, we have 6 phases, starting off with pre-seed stage. इसमें जो entrepreneur होता है उसके मन में एक तो आइडिया डेवलप होता है। वो आइडिया में भी कुछ तो वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकता है जिसको सॉल्व कर रहा है। इधर उसको अपने यूएसपी को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उस आइडिया को वैलिडेट करना पड़ता है कि इज दैट आइडिया वर्थ इनफ, उस पर टाइम देने के लिए वर्थ है कि नहीं। वो आइडिया, वो अगर वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है तो कितने लोग उस चीज से इम्पैक्ट होंगे, क्या हमारा टाइम एंड एफर्ट उस चीज के लिए वर्थ है। ये सब क्वेश्चंस का जब उसको आंसर मिल जाता है, देन ही मूव्स ऑन टू द सीड स्टेज। नाउ ही नोस कि उसका जो प्रोडक्ट है इट इज वेरी यूजफुल टू द वर्ल्ड। अब उसको पता है कि ही शुड इन्वेस्ट टाइम, तो वो चालू करता है। ही स्टार्ट्स टू मेक अ बिजनेस मॉडल। इन दिस स्टेज यू मेक अ बिजनेस मॉडल। जैसे हमने बताया था कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को देखना चालू करते हैं कि वेदर विल इट बी अ B2B प्रोडक्ट और B2C। क्या आप उसको फ्रीमियम मॉडल रखना चाहते हैं, क्या आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस में बेचना चाहते हैं, आप कितने प्राइस पे उसको बेचेंगे, क्या आप उसको एक बार बेचेंगे या फिर उसको आप रेंट करने दे देंगे, थिंग्स लाइक दैट। कि इसमें आपको बिजनेस मॉडल बनाना पड़ता है जो कि आप नियर फ्यूचर में उसको यूज कर सकें अच्छे से, जो कि एक्सपैंडेबल हो। ओके, मूविंग ऑन। अर्ली स्टेज इज वेयर यू आर मेकिंग योर मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। लाइक बिजनेस जो उसके पिछले सीड स्टेज था उसमें आप एक तो प्रोटोटाइप भी बनवाते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो कि आप दिखा सकते हैं लोगों को फंडिंग लेने के लिए। इन दिस स्टेज यू शुड बी रेडी विथ अ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, कि अगर कुछ ना हो तो आप इस प्रोडक्ट को कम से कम जाके मार्केट में अगर लॉन्च करेंगे आज के आज, तो लोग उसको खरीदने के लिए वो रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे कि हाँ कुछ तो आया मार्केट में। ये चीज़ आगे जाके और इवॉल्व हो सकती है कि आप उसमें बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग विच यू कैन सेल। यहाँ पर आपकी So I मार्केटिंग would like स्टार्ट to होती add. है। So in the early stage, this is where you get the seed funding. Early stage में आपको seed funding मिलती है. Yes. This is the phase where you will try to start to get fundings and where you will try to market your product. यहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट को बेचना चालू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
यू विल स्टार्ट टू जनरेट सम रेवेन्यू जो कि आप लोग दिखा सकते हैं अपने फंडर्स को, और जिसके अगेंस्ट में फंडिंग ले सकते हैं। ग्रोथ फेज, दिस इज द स्टेज विच इज मोस्ट एसेंशियल फॉर योर स्टार्टअप। इसमें आपको उस मिनिमल वायबल प्रोडक्ट को ग्रो करा के ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि हर किसी के घर पे आज हो, एटलीस्ट इन अ स्मॉल लोकेलिटी, कि एक वेस्ट बंगाल में, एक स्टेट में हर किसी के पास वो प्रोडक्ट, हर कोई उस प्रोडक्ट के बारे में जानता हो। आपको इतना उस प्रोडक्ट को मार्केट करना है। इसमें आप अपनी एक तो टीम भी बनाते हैं। अभी तक आप एक छोटी सी टीम के साथ वर्क कर रहे होंगे, या तो आपके साथ 4-5 को फाउंडर्स, बट नाउ यू नीड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, यू नीड सेल्स डिपार्टमेंट, यू नीड फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, सबके 2-2 3-3 बंदे होने चाहिए। टीम उतनी बड़ी नहीं होती है, बट स्टिल देयर इज अ हायरार्कियल सेटअप जो कि इस फेज में बनता है। रिक्रूटमेंट चालू होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस फेज इज टू ग्रो। यहाँ पर आपके पैसे भी थोड़े थोड़े आने चालू हो जाते हैं, सो दैट यू कैन व्हाट टू से एम्प्लॉयज को हायर कर सकें। नेक्स्ट स्टेज इज एक्सपेंशन स्टेज। आपका प्रोडक्ट चल रहा है, आप जहाँ पर इसको बेचना चाह रहे हैं, और आपका बिजनेस रनिंग है अभी, यू हैव अ वेल डिफाइंड टीम, यू हैव अ वेल डिफाइंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट नाउ you want to step out of that circle, of that locality, of that area, of that state. Now you want to expand it, you have to scale it up to the international markets, to the national markets. तो उस केस में आपको ये इस स्टेज को एक्सपेंशन स्टेज बोलते हैं। यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को इतना स्केल करते हैं कि आपकी रेवेन्यू शूट अप हो जाती है। यू विल हैव टू हैव अ वेरी हाई रीच। इसमें हम लोग लॉस मॉडल इनकर करते हैं, इसमें हम लोग कितना बार लॉसेस इनकर करते हैं अपने ऊपर, बहुत हाई ऑफर्स देते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट हर एक घर के पास पहुंचे, हर एक आदमी के पास पहुंचे इस स्टेज में, और लोग आपका प्रोडक्ट बाय करना चालू करें, लोगों को पता चले कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं। द नेक्स्ट फेज इज एग्जिट फेज। यहाँ पर आप अपना लॉस मॉडल को हटा सकते हैं। नाउ अब सबके पास ये प्रोडक्ट पहुंच चुका है, अब उनको पता है, अब उनको नेसेसिटी हो चुकी है। अब आपका प्रोडक्ट एक नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी। तो आप कॉस्ट बढ़ा सकते हैं अपना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस स्टेज इज हाउएवर नॉट मैंडेटरी। यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, अपना जो जो उनका स्टार्टअप है उसको किसी बड़ी कंपनी को सेल कर देते हैं विच अ वेरी हाई वैल्यूएशन, लाइक इंस्टाग्राम। वो एक तो बहुत अच्छा स्टार्टअप था, वो बहुत धीरे धीरे करके ग्रो किया, और एक पॉइंट पे वो बहुत अच्छा था, वो एक्सपेंशन स्टेज पे था, तभी फेसबुक ने आके बहुत हाई वैल्यूएशन पे उसे खरीद लिया, जो कि मे भी सही भी था, गलत भी, क्या पता इंस्टाग्राम उतना ग्रो कर पाता नहीं कर पाता, बट ओके। सो यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता है आईपीओ का, जस्ट लाइक वैष्णव टोल्ड अबाउट आईपीओ। यहाँ पर बहुत लोग पूरा कंपनी को ना बेच के आईपीओ लॉन्च कर देते हैं, अपने शेयर होल्डिंग को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, वो लोग कहीं और काम करना चालू कर देते हैं, और आईपीओ से आपकी कंपनी और ग्रो भी करती है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड। So now that we have reached the end of our session, so thank you for being with us. So now there are two forms that would be passed on in the chat for you guys: the feedback form and the quiz form. The quiz will start at 6:15. Chat, the moderators, please make sure of that. That this would be a 5-minute quiz consisting of 10 questions. So please, moderators, can you please send the links in the charts? Please fill in the feedback form and do take part in the quiz. We'll highly appreciate it. Okay, I guess there's some issue. Wait a second. So till then, please share your experience. How did you like our session? Thank you, Gavnesh. Thanks, Prasu Gupta. Okay. So I have shared the form link in the chat. So due to some delays,
We'll start the quiz at 6:20, and this quiz will be 5 minute long. So, we should start earlier. So let's start at 6:18. Yes. I'll Okay. start expecting responses. So please take part in the quiz, and I'll soon pass on the feedback forms link. Thanks, Rahul boy. Thanks, everyone. It means a lot to us. Thank you, Priyanka. Thanks, everyone. So I'll start the responses at 6:18 precisely. Please make sure to give the quiz, or you could have scanned this. Yes. Okay, Vaishnav, start accepting them. Yeah, we are accepting responses at 6:22 precisely. With the forms would be closed. Please make sure to answer Yeah, them. Ventures. Thanks for noticing them. Okay, the responses are coming in. Nice. Okay. So everyone, please make sure to give the quiz. Dipankar, you Okay, can the also feedback form is scan out the, there. yes, the feedback form is here, and you can also scan the QR code if you are having difficulties in opening the link. You can open the Google Lens and scan the QR codes there. Thank you, Siddhant, for sticking till the end. Yes, thank you everyone who stuck with us till the end. It means a lot, you guys. So, Okay, so about the PPT, we'll provide that in the Discord. Please do join the Discord server. Moderators, please send the Discord server link in the chat box. or for the Discord link, you can use the link tree. Be sure to join the Discord server so that you'll stay notified for the next upcoming events. And I guess this is it for us. Yes, once again, thank you everyone for showing your love and support here. Means a lot. So we'll be ending the session now. Have a good day. Enjoy your Sunday. Thanks for sacrificing your Sunday for Yes. us. Goodbye. Thank you, everyone. Bye bye, everyone.